Now coming back to lecture number 22 and unit 3. Today we have seen the glimpse of wages and incentives in our last lecture also. कि wages क्या है, incentives क्या है, और आज हम उनको अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे. और देन वी विल सी कि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मतलब कैसे होने चाहिए, कि वेजेस और इंसेंटिव्स कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए इनमें एग्जैक्टली जो एम्प्लॉयज और डिस्प्यूट्स न लाए और बढ़िया से बढ़िया वर्क हो. प्लस फिर हम आज से स्टार्ट करेंगे वेज इंसेंटिव प्लान्स के बारे में. तो 4 प्लान्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसा हमारे सिलेबस में है. तो सबसे पहले जो स्ट्रेट फीस रेट सिस्टम है वो देख लेंगे. उसके बाद टेलर है, मेरिक है, और एक और सिस्टम बनता है टेलर मेरिक, टेलर है, मेरिक का है, और इसके बाद एक और मेथड है गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम. तो ये 4 मेथड हैं. ये अलग अलग अपने टाइम पे आए थे. ये अपने टाइम के माने हुए लोग हैं और इनके मेथड्स को इंडस्ट्री ने भी अडॉप्ट किया हुआ है. कुछ आज भी कर रहे हैं, कुछ उसको मॉडिफाई करके अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं. We'll see all these things in our lecture. In today's and tomorrow's lecture, I have shared you a new timetable from applicable from today. Okay, so moving ahead with this first slide, which is having wages and incentives. What is exactly wage? वेज क्या है? वेज वो है नॉमिनल अमाउंट, या नॉमिनल वर्ड भी नहीं यूज करना चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट जिसकी हमारी बात हो गई सामने वाले से कि दिस वर्क यू हैव टू डू एंड वी विल कोट दिस अमाउंट to you against your services, and that has to be paid against the service provided by that person. So it is, the definition is like wages can be defined as the remuneration paid for the service rendered or taken from the worker or by the worker. Now it has been classified into two: what is nominal wage and real wage. So the nominal wage is the earning of the worker expressed in terms of money. It doesn't include any other benefit. जैसे नॉमिनल वेज वी कैन से कि जैसे हमारे घर में मेड है, तो मेड को जो भी मिलता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. मेड डजंट कैरी एनी अदर काइंड ऑफ बेनिफिट. ठीक है. एंड ऐसे और भी तरीके की प्राइवेट जॉब्स होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट यू गेट a salary or kind of a consolidated salary what you have, and you don't have any other kind of benefits like PPF हुआ, मेडिकल हुआ, या मेडिकल लीव्स हुआ, या EL हुआ, या CL हुआ, या PL हुआ. ये कुछ नहीं मिलता. जो मिलता है सैलरी मिलती है. एक जितने दिन आओगे उतने दिन की मिलेगी, जितना काम करोगे उतना मिलेगा. दैट इज नॉमिनल वेज. Now comes the real wage. What is real wage? In addition to cash payment, what we have got in nominal wage is cash payment. Cash payment against the work done. Now, in addition to cash payment, real wages include other benefits also, like they will provide you uniform, they will provide you rent for free accommodation, rent या free accommodation provide करेंगे, या sometimes they may give you medical facility, yeah, sometimes they will give you the education part also. Okay, then some other terms we have seen that what is minimum wage, what is fair wage, what is living wage. So what is exactly a minimum wage is, you know, if somebody has to standardize their living, somebody has to standardize their living and has to live a life like above poverty line, then the amount he is getting is minimum wage. It is just in classification kind of a thing. Then what is fair wage? Fair wage is like, you know, you have assured or assured मैंने पक्के से वो अमाउंट पे कर दिया उसको जितना उसने काम कर दिया है. इट्स लाइक यू नो assuring someone to pay equally as he or she has worked. Say equal pay for equal work, rather I should say. So this is called fair pay. फेयर पे मीन्स मैंने उससे 10 घंटे काम ले लिया और दिन 1 घंटे का 8 घंटे का होता है और मैंने उसको पे 8 घंटे ही किया है. So that is not at all a
fair pay. And what is living pay? Living pay is living wage is like, it assures the maintenance of life standards in a locality. Living pay is like the kind of a locality you have. जिस area में मैं रह रहा हूँ उसके according की if I am getting monetary money, this means that is living wage. So these are the terms comes under which exactly in your syllabus they have not at all even written here to explain the wage or incentives and all. They have started right from जो wage और incentive के plans हैं वहाँ से उन्होंने चालू किया है, but if somebody has to start they have to share the basics of it. Now we'll see the desirable characteristics of the good wage and incentive system. Okay, first of all is it should guarantee an adequate minimum wage. Now what is minimum wage? We have studied what is the minimum wage. If somebody wants to live above the poverty line, standard living of people or whosoever is living above the poverty line, then it gives you the minimum wage. So one system has a surety or a guarantee of adequate minimum wage. Another thing is the wage system should be simple and easy to understand. Yes, it should be simple and easy to understand and easy to calculate as well to both the parties. To who are the both the parties? The company. One party is the company who will be delivering this, and another party is the staff, the worker, the labor, whosoever is the at the receiver end. So these party both for both of them it should be simple, easy to understand and easy to calculate even if they have worked somewhat extra, so that extra one has to pay also. Okay, so it should be simple. Okay, now next point is it should not involve excessive clerical work and thereby increasing the ultimate cost. See, if in any organization unnecessary किसी को परेशान करने के लिए या रोकने के लिए या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए unnecessary clerical work हम बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली हम अपना लॉस कर रहे हैं. कैसे लॉस कर रहे हैं? unnecessary उसकी टाइम की सेटिंग होगी. इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू डू कि यार 8 घंटे नहीं तो ये काम खत्म करके जा आज. इसमें तेरे को कागज लगते हैं तो मैं दे रहा हूँ, टाइम लगता है तो तेरे को देना है. तो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक, तो एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन अपना लॉस कर रहा है, अपना कॉस्ट बढ़ा रहा है. कॉस्ट बढ़ेगी तो अगर उसकी एमआरपी सेम है तो उसका जो रेवेन्यू है वो घटेगा. वी नो द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस व्हिच इज एमआरपी. सो अगर कॉस्ट बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा क्योंकि मेरी एमआरपी या सेलिंग प्राइस फिक्स है. सिंपल सी चीज है. और इस कॉस्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वी हैड टू रिड्यूस द कॉस्ट. इट इज नॉट लाइक सारे खर्चे बचा दूं बिजनेस ही भेज दूं, बट we had to employ some kind of smart work. Smart work माने ऐसा काम करें कि मिनिमम वर्क में मैक्सिमम आउटपुट मिले, जिससे हमारे एम्प्लॉय को भी ट्रबल ना हो, हमारा भी काम हो जाए, टाइम भी बचे, उसका फटीक लेवल भी कम हो. वो सारी चीजें we had to think of. Next point is the wage system should fall same for both employer and employee. That is there. And in second point itself we have seen कि दोनों के लिए सेम होगा तभी तो कैलकुलेशन सिंपल होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और इजी टू कैलकुलेट होगा. बट समवेयर इट हैपेंस लाइक एम्प्लॉयज को दिखाया कुछ और जाता है और कैलकुलेशन कुछ और बेसिस पे की जाती है. सो दैट इज नॉट एन फेयर सिस्टम. ये भी हो सकता है. इट मस्ट रिवॉर्ड द वर्कर अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी एंड मेरिट. डेफिनेटली इन प्लान्स में उनकी एफिशिएंसी और उनके अच्छे काम के कारण उनको जितना अच्छा हम दे सकते हैं, that is good enough. And then waste of material as well as careless use. नहीं, यहाँ ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ है. The waste of material as well as carelessness should not be there because waste of material है या any careless approach is there, then this will again increase the cost.
जितना मटेरियल वेस्ट होगा या जितना केयरलेस एम्प्लॉय रहेगा तो उतना कॉस्ट बढ़ेगा. अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो अगेन revenue will come down, will reduce, because in this competitive world MRP is cannot be stretched to a high limit. Competition is very high in selling price nowadays, so we have to work only on cost and effectiveness of the system. So next point is like incentives, bonuses जो भी रहते हैं should be payable along with the wages, not left for the future period in any of the type. See what these incentives and bonuses are all about. As I told you, in Indian context, if we see, तो जो इंसेंटिव और बोनस होते हैं भले वो सैलरी से बहुत कम हो. से इफ somebody is getting salary of 10,000 say suppose, and हर मंथ का जो उसका इंसेंटिव है या वीकली इंसेंटिव है जैसा भी कंपनी पे करती है, if they are getting 400-500 रुपए वीकली इंसेंटिव या मंथली उसको 2-1 हज़ार रुपए इंसेंटिव मिल रहे हैं या क्वार्टरली उसको अगर बोनस मिल रहा है 2-3 हज़ार रुपए का, सो वो ऐसा है जैसे यू हैव एडेड एक्स्ट्रा स्पून ऑफ शुगर इन योर टी. सो दैट इज वो सैलरी से भी ज्यादा प्यारा होता है. जैसे हम टीचर्स के लिए इफ यू सी कहीं वाइवा लेने जाते हैं तो मिलता है 400-500 रुपए, 4-5 घंटे खराब होते हैं लेकिन मिलता है 400-500 रुपए, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा वो अच्छा लगता है. तो फैक्ट्री जॉब्स में तो इंसेंटिव वो बोनस भर के होते हैं, अच्छा होता है. मैंने वो लाइफ जी है तो बहुत अच्छा होता है और वो तुरंत के तुरंत मिल जाता है. तो उसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय का जो इंथू लेवल है काम करने के प्रति वो बहुत हायर एंड पे रहता है. उससे ले दे के एक्चुअली कंपनी को ही बेनिफिट होता है, क्योंकि द मोर employee is on the positive side, the more will be the productivity. इन अदर वे उनको प्रोडक्टिविटी सोचनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय का हैप्पी रहना और फुल ऑफ इंथू रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. वो उनके लिए अल्टीमेट बेनिफिट है, इट्स नॉट फॉर द एम्प्लॉय. अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाऊं तो बीइंग एन एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के को हमेशा फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए और फॉर दैट एम्प्लॉय शुड बी हैप्पी. अगर वो हैप्पी है तो थिंग्स विल मूव, थिंग्स विल प्रोग्रेस, और एम्प्लॉय नई नई चीजों में अपने आप को अपडेट करके हमेशा कंपनी को ग्रोथ ही देगा. तो ये अप्रोच हमेशा होनी चाहिए. Now, to meet the challenging economic condition, it should have sufficient flexibility. Yes, economical challenges कैसे आते हैं? Sometimes orders are very high on high demand. Sometimes orders are very less. Sometimes what happens, material cost increases. Sometimes what happens, जी जो हम बाहर से काम लेते हैं, हम लोग वेंडर्स से काम लेते हैं, they have price increase the price. There are several issues. या कोरोना जैसे issues आ गए, तो it should have that plants should have adequate flexibility to gear up the situation. उसको कैसे हैंडल करना है इन कंडीशंस में, that those plan must include the similar kind of things. Okay, now the just 2 points remains with us for this. The workers should not be rewarded on the basis of higher output, but the length of service, regularity, attendance, quality of work should be considered. Yes, definitely. Higher output, अब कोई एम्प्लॉय है, अब 30 दिन में से 20 दिन आया और उसने बहुत टॉप क्लास परफॉर्म किया, एंड रेस्ट 10 days he said कि मैं आराम करूंगा, I am too much tired, now I take a rest of 10 days. So it is not at all accepted, because any of the thing like we as a professor, हम ये करें कि मैं 30 दिन का सिलेबस 20 दिन में पढ़ा दिया, अब 10 दिन में क्लास नहीं लूंगा, तो ये ठीक नहीं है. एटलीस्ट अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए. इसी तरह से एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि मैं 30 दिन में से 20 दिन क्लास गया, 10 दिन नहीं गया, बस 20 दिन बहुत है. इट अचीव्स माय 65 और 70% ऑफ अटेंडेंस, रेस्ट आई विल सी इन नेक्स्ट मंथ. तो ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए आइडियल केसेस में. तो ये प्लान्स में इंक्लूड होना चाहिए कि किसी की रेगुलरिटी अटेंडेंस की
और कंटिन्यूस क्वालिटी जो क्वालिटी वर्क है, if somebody is delivering, so he or she should be rewarded, not only the higher output for few days and the rest of the days if somebody is taking rest and all, कि अब नहीं जाऊंगा बस इतना कमा लिया, अगले अगले महीने देखेंगे, इट शुड नॉट हैपन। और वो बीइंग ए ह्यूमन हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। एक एवरेज स्पीड से वर्क करो, रेगुलर वर्क करो और हमेशा के लिए रहेगा। सो वो हैबिट, दैट हैबिट इज गुड फॉर एवरीवन। Okay, last point is the wage plan should be helpful in seating team spirit and add in supervision. Yes, these wage plan definitely, as I told you, into high rakhega, so that is nothing but team spirit, fair system रहेगा, easy to understand अगर है दोनों end पे, और into बना रहेगा, regularly मिल रहा है, जो भी monthly weekly जैसा भी plan है, if they are not picking it for बाद में देंगे वैसा वाला नहीं है, तो हमेशा टीम स्पिरिट बनी रहेगी और सुपरवाइजर्स को भी बहुत आसान रहेगा क्योंकि टीम स्पिरिट बनी हुई है, तो उनसे काम लेना बी वेरी इजी। ठीक है, now let us see what are incentives and what are incentive schemes and what kind of incentives we can we are here to share with. So first of all, incentive जो है वो वेज से ऊपर वाली चीज है, माने it is somewhat extra paid to any of the person who has performed for their efficiency and hard work. It is clearly written, incentive is an reward given to the worker for his efficiency and hard work. So it is somewhat extra what you get, what you are regularly used to get. So now what are those schemes, incentive schemes? It is defined as a system of wage payment, under the earning of an employee or a group of employee or employees in an organization who is going to get it directly as an output of the accepted quality. Now what is accepted quality? As I told you, we have inspection department. Incentive schemes calculates the things at the end of the accepted quality, because once one has to produce in the certain limits, they have been provided with the drawings, they have been provided with the specification specified in the drawings and desired quality of work. So वो inspection वाला बताता है कि this boy A has produced 100 items as given, but 20 items are not of accepted quality, so only 80 he has achieved and the target was 90, so he is lagging 10 10 articles behind. And if the nominal target is like 60, then he is somewhere 20 articles ahead of the target given. So this way they'll be calculating it, and it is clearly written and over and above standard laid down by means of predetermined formula. तो हमेशा एक बंदे को टारगेट मिलता है कि for 8 hours you have to achieve these many articles, but of accepted quality. Accepted quality का ही होगा, then and only then you will be, and it will be applicable for, or you will be applicable for incentive scheme, otherwise not, है ना। otherwise तो क्या होगा, material waste होगा, तो वो ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सो दैट शुड नॉट हैपन। anything wastage who is directly applicable for directly applicable for that article, producing that article will incur cost, वो cost में include होगा, वो cost carry करेगा। okay, so then we will see what are types of incentives. So first is financial incentive. What is financial incentive? Incentives, it is directly in terms of money. Kaisa directly in terms of money? It is like profit sharing and bonus sharing. So these comes under financial incentives. What are non-financial incentives? Like praise for good work. If somebody said, let me give a pat on your back that you have done a good job, or sharing someone's job in front of the
gathering that he has done a good job, or providing a certificate kind of a thing. He has done pretty good job for last month, for last quarter, for last half yearly, for last these many years. He is doing very good job. So these are non-financial incentives. Some other non-financial incentives are like we are making him, we are making his appointment in converting his appointment into permanent one. इसको मैं permanent कर रहा हूँ, 60 साल तक ये मेरे पास permanent रहेगा. अब इसकी job security में increase कर रहा हूँ. Till time he was on probation, now his work is very satisfactory, और 60 साल तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, मैं इसके साथ बॉन्ड कर रहा हूँ, उसको नहीं, मैं बॉन्ड कर रहा हूँ उसके साथ. His work is very good. Yeah, sometimes one must say कि because of his consistent work of better good quality or desired quality, he is selected, or he or she is selected for a particular training, है ना. तो भाई इसको अपग्रेड करने का मैं चांस दे रहा हूँ. अपग्रेड ये ट्रेनिंग हो के आएगा तो उसको मैं प्रमोट करूंगा इस पोजीशन पे. देन हिज सैलरी स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, वेज स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, और इंसेंटिव स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, है ना. या फिर मैं किसी बंदे को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर लूँ कि नॉर्मली वो कॉमन प्लेस पे बैठता था, नाउ हिज वर्क इज लाइक वेरी गुड, आई विल गिव हिम अ केबिन और अ क्यूब फॉर सेपरेट सिटिंग. तो वो भी एक तरह का ये है. या मैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर लूँ, आई एम गिफ्टिंग हिम मेडिकल इंश्योरेंस, उसका मैं पे करूंगा या कंपनी पे करेगा. So kind of things comes under non-financial incentives. Now the semi-financial incentives like subsidized lunch अगर कंपनी दे रही है, subsidized lunch अगर कंपनी is paying you, और subsidized houses आपको दे रहे हैं कंपनी के अंदर. if you are getting a house, then you may be paying 500 or 1000 rupees only, so that is a subsidized facility. या आपको पेंशंस या कोई अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं. पेंशंस में जैसे अगर आपकी सैलरी से 1000 रुपीज कट रहा है, 1000 रुपीज कंपनी भी डाल रही है. सो दीज आर काइंड ऑफ सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. देन इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम इज इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो वो एप्लीकेबल होती हैं. देन समटाइम्स you will be having a group incentive scheme. Group incentive scheme में क्या होता है, along with leader जो भी group members हैं उनको collective gift दिया जाता है. Now this sales team has done a very great job, you will be having a tour, a gifted tour from company side, and you will be visiting Singapore, Malaysia and all. तो सेल्स में वो काफी चीजें होती हैं. समटाइम्स प्रोडक्शन में इस तरह की चीजें कम होती हैं, चीजें सेल्स में ज्यादा आती हैं. Okay, we have around 7 minutes left with us, so we will complete our first this thing. First, in wage or incentive plan, as I told you, we have 4 kind of wage incentive plans. First one is a straight piece rate system. Another one is tailor two piece rate system, a differential piece rate system. Then we have Merrick's method. Then we have Gantt chart and bonus system. So let us go through the first method, which is straight piece rate system. It is ये जो straight piece rate system है, these are basically for small operation or a single-handed operation or a manual operation. Like एक ही काम को repetitive manner में मुझे बार-बार करना है, जैसे loading है, unloading है, बॉक्स को ओपन करना है, बॉक्स को बंद करना है ना. तो ये इंडिविजुअल वर्क जो रिपीटेटिव टाइप का है उसके लिए होता है. इस सिंपल पीस रेट सिस्टम में द कंप्लीशन, जॉब के कंप्लीशन पे जो पीस रेट सिस्टम होगा या जो इंसेंटिव का पार्ट होगा वो फिक्स होता है. If a worker produces more acceptable in prescribed time, then he'll get extra money. Like if somebody has to produce X amount of prescribed quality, तो अगर वो उस X amount से आगे निकल जाता है, then he'll be get some extra money out of it. Like we have an example here. A worker is paid rupees 0.50 per job. These are the
sample figures. This is not at all, you know, the accepted figures. So if a worker is paid like 50 paisa per job extra, then he has to prepare 40 jobs in 8 hours of work. But if he prepares 60 jobs, तो उसको 60 jobs में कितना मिलेगा, 30, and instead of 40 jobs which is costing 20 rupees per day. ठीक है, तो एक बंदे को यहाँ पे 50 पैसा मिल रहा है पर जॉब का, एंड ही हैज टू प्रिपेयर 40 जॉब्स, एक दिन में उसको बनाने हैं। 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे का दिन माना जाता है, कॉलिंग अ डे। तो अगर वो 60 जॉब्स पर डे बना रहा है तो माने वो जो अर्न करेगा 20 अर्न करेगा। अगर वो 40 बनाता जो मिनिमम था 8 घंटे के लिए, तो वो 20 रुपीज होता। नाउ व्हाट ही इज गेटिंग इज rupees 30. It's just an example to, you know, make you people understand what the system is all about. Now let us see the advantages and disadvantages of the same. Okay, so it provides the direct incentive of increased output. Yes, if somebody is moving ahead of the targeted value, then he'll get extra incentives. And it is, yes, of course, it is easy to understand and calculate. It's very crystal clear and easy to calculate and easy to understand as well. So now, what overhead costs are reduced as a result of their, अगर हम उतने ही समय में नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बना लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है, बिकॉज वी हैव प्लान फॉर 40। जो भी इनपुट था वो सेम था, बट उस ऑपरेटर ने, उस वर्कर ने, उस स्टाफ ने उतने समय में ज्यादा आउटपुट दिया है। सो जो ओवरहेड कॉस्ट था, जो अगर 40 जॉब की जगह 40 जॉब भी बनते तो वो 20 जॉब जो एक्स्ट्रा बने उसकी कॉस्ट नेक्स्ट शिफ्ट में इंक्लूड होती, जो कि यही इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सुपरविजन रिड्यूसेस। यस, वो 20 जॉब का सुपरविजन कॉस्ट भी बच गया। तो इस तरह से ओवरऑल उस बंदे ने भी कमाया और कंपनी ने भी अर्न किया। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? लेट अस सी। डिसएडवांटेज ये होगा कि हमने उनको बोला है कि आपको 40 जॉब से ज्यादा बनाना है, तब आप ज्यादा अर्न कर पाओगे। डेफिनेटली एवरीबॉडी विल वर्क फॉर मोर मनी, बट मोर मनी के लिए उनको एक्सेप्टेबल जॉब्स ज्यादा होना चाहिए, जिसमें ये हो सकता है कि वो जल्दीबाजी करें। जल्दीबाजी में ये होगा कि रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो सकती है। हो सकता है वो 40 की जगह 60 को अचीव करने के लिए 80 रॉ मटेरियल के पीसेस को पिक करे, जिसमें से वो 20 वेस्ट कर दे और 40 की जगह 60 को अचीव किए। तो द रॉ मटेरियल पीसेस ही हैज यूज्ड बाय 80 और अचीव कितने की? 60, वेयर हैज अचीव 40 ओनली। 40 एक्सेप्टेबल क्वालिटी के उसको चाहिए थे, लेकिन उसने 60 अचीव कर लिए, बट बाय द टाइम उसने 20 को वेस्ट भी कर दिया। सो दिस इज टोटली द शेयर वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इंक्लूड्स इंकर्स कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट है, यहाँ कंपनी का मार्जिन कम हो गया। सो one should not get the incentives in these cases, and it is purely the depreciation of cost tools, क्योंकि वो जल्दीबाजी में ज्यादा काम, ज्यादा आउटपुट, क्योंकि उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, उस चक्कर में उसने ये सारा लॉस किया है। तो इन दैट केस वन शुड नॉट गेट दिस थिंग। ठीक है, और इस कारण से जल्दीबाजी में कई जो एम्प्लॉयज हैं वो क्वालिटी को भी अचीव नहीं कर पाते हैं, इग्नोर करते हैं क्वालिटी को ज्यादा अर्न करने के चक्कर में। ओके, सो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, वी विल सी इट बाय टुमारो। बहुत सिंपल और बहुत मजेदार है। एंड सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड ऑफ टुडेज लेक्चर। विल say bye for now. If you have any problem, definitely we'll discuss in next lecture as well. Okay, if you have any doubt, definitely share with me and we'll meet in next lecture then.